morning class 7th. So yesterday we were discussing the climate in the polar regions. Our last topic that we have discussed was climate pertaining in polar regions. ठीक है, तो आई थिंक वो थोड़ा जल्दी हो गया था. आज एक बार दोबारा हम क्लाइमेट और एडेप्टेशन पोलर रीजन में डिस्कस कर लेंगे. उसके बाद ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का क्लाइमेट और एडेप्टेशन डिस्कस करेंगे. आई होप कल वाली क्लास का जितना भी मैटर था दैट वाज क्लियर टू यू. ओके, सो मूविंग ऑन. It snows around a year. Animals have special adaptations that help them survive in a specific habitat. Let's take the example of the polar bear. In the polar regions, the temperature drops as low as -37 degrees Celsius. To suit this environment, the polar bear has a thick layer of fat under its skin. This allows it to keep it warm. This thick fat content increases its body weight, because of which it cannot walk too fast and needs to rest to avoid overheating of its body. The white fur on its skin camouflages it with the surrounding, which protects it from predators and also helps it to catch its prey. During summer in these regions, the polar bear goes swimming to cool its body. The wide and large pores help it not only to swim very well, but also help it walk easily in the snow. On the other hand, the penguins do not have a thick fur coat on their body, but are always found huddled together to keep themselves warm. They have thick skin and thick layer of fat to keep their bodies warm. Like the polar bear, the penguins are good swimmers too. Their webbed feet and streamlined bodies help them swim with ease in the ocean. Unlike the animals, the birds in these regions cannot tolerate the cold weather and hence find other ways to protect themselves. Did you know that the Arctic tern travels 15,000 with the surrounding? They have thick skin and thick layer of fat to keep their bodies warm. Like the polar bear, the penguins are good swimmers too. Their webbed feet and streamlined bodies help them swim with ease in the ocean. Unlike the animals, the birds in these regions cannot tolerate the cold weather and hence find other ways to protect themselves. Did you know that the Arctic tern travels 15,000 kilometers to come and lay its eggs? Birds cannot survive the cold and hence travel to warmer regions till the winter ends. This is known as migration. What? तो what is migration? Migration होता है जब जो birds होते हैं वो climatic conditions that is extreme cold टॉलरेट नहीं कर पाते, तो वो क्या करते हैं, एक एरिया से दूसरे एरिया में फ्लाई करते हैं. ठीक है, और ऐसे एरियाज में जाकर फ्लाई करते हैं जहाँ पर उनको उनके अकॉर्डिंग वेदर कंडीशंस हो. ठीक है, इतना ज़्यादा ठंड ना हो. इज इट क्लियर? One common destination for these migratory birds is the Vedantangal Bird Sanctuary in India.
Do animals in warmer regions have similar adaptations too? Let's find out. तो क्लास क्लाइमेट एंड एडेप्टेशंस इन द पोलर रीजन्स आपका कल ही हो गया था, बट हो सकता है कि आपका थोड़ा जल्दी वो वीडियो चली गई हो, बट आई थिंक आपको आज क्लियर हो गया होगा काफ़ी अच्छे से। ठीक है, पोलर बियर के करेक्टरिस्टिक्स, पेंगुइन के करेक्टरिस्टिक्स और बर्ड्स क्यों माइग्रेट करते हैं एक प्लेस से दूसरे प्लेसेस तक। इज इट क्लियर? सो टुडे आवर क्लास बेसिकली स्टार्ट्स फ्रॉम हियर, that is climate and adaptations in the tropical rainforest. Is it clear? Tropical rainforest का climate कैसा होता है और animals और birds वहाँ पर किस तरह से adapt करते हैं, क्या basic characteristics होते हैं, क्या उनमें peculiar characteristics होते हैं जो उनको वहाँ पर रहने के लायक बनाते हैं। Annie's parents have planned a vacation to the rainforest resort in Malaysia. I experienced the cold winter a month ago and now it's hot and humid here. Wonder how the animals live here in this climate. तो एनी और उसके पेरेंट्स एक प्लेस पर गए हैं जो कि ट्रॉपिकल एरियाज में है। तो शी इज सेइंग कि आई एक्सपीरियंस्ड विंटर अ मंथ एगो, एक महीना पहले उसने विंटर्स एक्सपीरियंस करी थी। अब हॉट और ह्यूमिड क्लाइमेट है, तो यहाँ पर एनिमल्स कैसे रहते हो, तो लेट्स फाइंड आउट। The tropical regions are normally hot and humid. The tropical rainforests are largely located in the equatorial region. They are found in Central America, South America, Central Africa, Southeast Asia, and in the Western Ghats and Assam in India. तो ट्रॉपिकल एरियाज, ट्रॉपिकल रीजन्स आर द एरियाज दैट लाइज नियर द इक्वेटर। ठीक है, तो देयरफॉर द टेम्परेचर जो वहाँ का क्लाइमेट होता है थोड़ा हॉट होता है और ह्यूमिड होता है। तो दीज आर द एरियाज विच आर मार्क्ड इन नियॉन ग्रीन, जहाँ पर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट पाए जाते हैं। दैट इज साउथ अमेरिका, सेंट्रल अमेरिका, वेस्टर्न घाट्स, असम, साउथ ईस्ट एशिया। So these are the areas on the board map that are being located. During summers, the temperature crosses 40 degrees, while in winters, the temperature remains above 15 degrees. तो यहाँ पर आप देखो, आपको बता रखा है कि समर में जो टेम्परेचर होता है वो 40 डिग्री को क्रॉस कर जाता है और विंटर्स में टेम्परेचर 15 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है। ठीक है, The rainforests in these regions receive plenty of rainfall. This kind of climate is best suited to a wide variety of animals and birds. Since the number of animals and birds is large, the competition for food exists between species. this I have already told you when we were reading the chapter, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, बहुत सारी प्लांट्स और एनिमल्स की वेराइटीज रहती हैं। Therefore, there is a competition of food among them. Is it clear? Each of the species living in these regions has special adaptations that help them survive in this habitat. Ah, these are the orangutans. These monkeys are as large as humans and weigh about 90 kilograms. So these are the type of monkeys that is orangutan. Its weight is 90 kilogram
They are the largest tree-dwelling mammals. The orangutans use tools such as twigs to dig insects and leaves, and also to scoop water. ये ओरंगुटन्स क्या करते हैं? ये ट्विग्स को यूज करते हैं इंसेक्ट्स को डिग आउट करने में, एंड लीव्स एंड स्कूप वाटर. This is the Malayan tapir. This is a species found mostly in these regions. The tapir has a half black and half white body color, which provides a good camouflage against the green cover of the rainforest. The tapir has poor vision. Since it is active only at night or during dusk, it relies on its keen senses of smell and hearing to search for food and protect itself from predators. Apart from these animals, the rainforests also house tigers, gorillas, lions, apes, elephants, lizards, snakes, birds, and insects. Most animals in the tropical regions have a keen sense of smell, sharp eyesight, thick skin, sensitive hearing, and a skin. See, these are the characteristics of the animals that are living in the tropical regions that are told to you that they have an keen sense of smell. उनकी जो स्मेल करने की पार होती है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा इजीली स्मेल कर लेते हैं. शार्प आईसाइट और काफ़ी शार्प आईसाइट होती है, ठीक है. थिक स्किन, जो स्किन होती है उनकी वो थिक होती है. सेंसिटिव हियरिंग, स्किन कलर दैट ब्लेंड्स विद द एनवायरनमेंट. इज इट क्लियर? That blends with the environment to protect them from predators. Let's look at what we've learned so far. So this is about polar bear region. Polar regions में रहता है adaptation fur to keep warm. These are the adaptations of penguins. Huddle together to keep themselves warm. These are the characteristics of orangutan. Dwell on trees. Use tools such as twigs to dig insects and scoop water. Then comes the characteristics of Malayan tapir. Body color for camouflage, strong sense of smell, strong hearing sense to protection from predators. So this was all about the 4 animals that we have discussed. 2 were of polar regions, that were polar bear and penguins, and then 2 we have discussed of tropical rainforest. So you people have seen that किस तरह से दोनों के adaptations में कितना difference है. Is it clear? The animals that are living in polar regions, उनके fur होते हैं, ठीक है, thick skin होती है, skin के नीचे fat की मतलब layers होती हैं. और on the contrary tropical rainforest में जो animals हैं उनके क्या क्या किस तरह से adapted है.
here is a summary of all the concepts that you have studied. Is it clear, class? Let's look at what we have learned so far. Weather is the day-to-day changes that take place in the environment. So weather आप सबको पता है day to day changes that take place in the environment. The average weather pattern in a region recorded over a long period of time is known as the climate of that region. The average weather pattern recorded is known as climate. Let's look at what we have learned so far. Weather is the day-to-day changes. Let's look at what we've learned so far. ये adaptations आपने पढ़ लिया polar bear के. तो this was all about the summary जो आपने chapter पढ़ा है. इसके बाद हम करेंगे छोटा सा assessment. आपने आंसर्स मार्क करने हैं. Which of the following is not an element of weather? आपने इसमें से बताना है कि एलिमेंट वेदर का एलिमेंट कौन सा नहीं है इनमें से. टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल, सनसेट. क्लास यू हैव 1 minute. You have to mark the answer which of the following is not an element of the weather. वेदर का एलिमेंट इनमें से कौन सा नहीं है. टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल और सनसेट. प्लीज मार्क द आंसर्स फास्टली. टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल और सनसेट. आंसर वुड बी, सो लेट्स टेक द आंसर. आंसर विल बी सनसेट. आप सबको पता है टेम्परेचर इज एन एलिमेंट ऑफ वेदर. ह्यूमिडिटी इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ वेदर. रेनफॉल इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ वेदर. बट सनसेट इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ वेदर. Now next is which of the following is a measure of moisture in the air? Moisture का measure क्या है? Rainfall, temperature, humidity और weather. You have to tell the answer. इनमें से moisture का measure कौन सा है? Rainfall, temperature, humidity और weather. You have to mark the answer. You have 1 minute. Mark the answer fastly. Then we will discuss it. Which of the following is a measure of moisture in the air? Rainfall, temperature, humidity or weather? So the answer will be humidity. What is humidity? Humidity is the measure of moisture in the air. Next question is, what is the average weather pattern of a place taken over a long period called? First option is weather, second is humidity, third is temperature and fourth is climate. You have to tell what is the average pattern of a place taken over a long period of time called. एवरेज वेदर पैटर्न को क्लास क्या बोला जाता है? यू हैव 1 minute टाइम. मार्क करो इसको. वेदर, ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर और क्लाइमेट. What is the average weather pattern of a place taken over a long period called? Weather,
be climate. Climate is the average weather pattern of a place taken over a long period. Typical desert climate is, desert का climate कैसा होता है? Hot और humid, moderate and dry, hot and dry, cold and humid. आप लोग साथ के साथ आंसर्स मैच करते जाना। तो डेजर्ट का क्लाइमेट क्या होता है? हॉट एंड ड्राई। व्हाट इज द क्लाइमेट ऑफ डेजर्ट? हॉट एंड ड्राई। नेक्स्ट इज which instrument is used in the measurement of maximum and minimum temperatures during a day? दिन के दौरान मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर्स कौन से इंस्ट्रूमेंट से पता लग सकता है? मार्क द आंसर। मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर किससे पता लग सकता है? दैट इज थर्मोमीटर। आंसर इज थर्मोमीटर। हैव यू डन ऑल दीज 5 आंसर्स? तो इन 5 आंसर्स को चेक कर सकते हो क्लास आप लोग, आपके कितने आंसर्स ठीक हैं। आफ्टर नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन अ प्लेस विच ऑफ द फॉलोइंग चेंजेस फ्रॉम डे टू डे? डेली क्या चेंज होता है? फर्स्ट इज क्लाइमेट, सेकेंड इज वेदर, थर्ड इज लॉन्गिट्यूड एंड फोर्थ इज लैटिट्यूड। सो which of the following changes from day to day? Mark the answer class. So which of the following changes from day to day? That is climate, weather, longitude or latitude. The answer will be weather.